बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नाशी खान की लीडरशिप में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करने जा रही है 10 अक्टूबर को, जो कि यूएनओ के तहत सारी दुनिया में ये दिन इस मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, पहले कोविड था, फिर अब फ्लड के इश्यूज़ आ गए। दीज आर काइंड ऑफ स्ट्रेस के जो लीड करते हैं मेंटल हेल्थ को और दूसरी चीज़ों को, और इसके ऊपर अवेयरनेस, काउंसलिंग और आइडेंटिफिकेशन के जी अगर खुदा न खास्ता किसी को है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर करने की ज़रूरत है। उसको कोई ऐसा कोई स्टिग्मा या ऐसा चीज़ नहीं है, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। और हम यूनिवर्सिटीज़ में यंगस्टर्स को डील करते हैं, और यंगस्टर्स भी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी हैं, और ख़ास तौर पे दे आर हैविंग मोर स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। स्टडीज़ के कंपटीशन है, जॉब्स के कंपटीशंस हैं, और फिर ये इस एज ऐसी है कि इसमें बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं। तो इन सब पे हमें एज ए टीचर, एज ए सीनियर बच्चों को मेंटोरिंग और उनके बिहेवियर और सब को हमें देखना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ में कैरियर काउंसलिंग सेंटर के साथ साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स की भी ज़रूरत है, ताकि ये जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो उसको हम एट इनिशियल स्टेज पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको देख सकें। और ये जैसा एक्सपर्ट्स कहते हैं जी कि मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो एज 14 एडोलेसेंस से ये शुरू होते हैं। तो उस एज से ऑनवर्ड हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई चीज़ें देखें तो उसमें उसको प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से उनसे रहनुमाई हासिल करें। मैं अप्रिशिएट करता हूँ प्रोफेसर नाशी खान, जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर कमल अमीन, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे या जहनी सेहत के आलमी दिन के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगी। हम सब इर्द गिर्द देखते हैं कि आजकल जहनी सेहत के हवाले से बहुत गुफ्तगू भी होती है, और हम बच्चों में और अपनी नौजवान नस्ल में भी इसके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ये इस बात से इनकार नहीं है कि कोई भी मुआशरा, समाज, फ़र्द जिस्मानी और उसके साथ साथ ज़हनी सेहत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। तो इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी हमें जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत को भी फोकस करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे समाज पेचीदा हो रहा है, तरक्की एक ख़ास अंदाज में हो रही है, उसके साथ साथ हमारे ज़हनी मसाइल और जो तब्दीलियाँ हमारे इर्द गिर्द होती हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, उनके साथ नबूरद आज़मा होना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और वो एक कुछ ज़रूरी और कुछ गैर ज़रूरी स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के मनफी रवैये और जज्बात उनमें पैदा होते हैं। और हम देखते हैं कि आउट ऑफ कुछ ऐसे ही हमारे सामने वाक़यात होते हैं कि जो फिर मुआशरे को हिला देते हैं कि हम ये कहाँ पे जा रहे हैं। तो इस दिन के हवाले से मेरा ये ख्याल है। Hello everyone. I thank Dr. Nashi Khan for inviting me to be part of this very important seminar. The pandemic has made us more sensitive to the mental health. And this is the silver lining to this dark cloud, which has made us realize that it's not only the physical health which is important, the emotional health, the social balance has to be also present. During the pandemic, we were threatened for life. We all had to get shots. We all had to cover our faces, and we all had to be indoors most of the time. This has made us realize that
mental health is also very, very important. There are some sectors of the society which are more vulnerable than others, and some of these are physically ill people. Fortunately, I am posted at Shifa Tamir Millat University, and we are part of medical faculty. And there, my student and myself get interaction and training opportunities in the medical college and medical hospital itself. Some of the faculty of medical college has been teaching our students, and some of my teachers have been teaching some medical students on. The government of Punjab, for instance, has said there will be psychologists in all the public schools. Whether or not it gets into practice is another story. But are we ready for it? Do we have psychologists trained in school counseling? Do we prepare them about the diversity of primary school children and high school children, and how to help them in identifying their talents and their personal qualities so that they can have a successful career? We don't know this and we do not even train our people about it. I am working at Shifa International Hospital and in the Faculty of Medicine. I was invited a few years back to establish a department of clinical psychology. And establishing a new department is not easy, especially if it is not a government institution, it's a private institution. There are many, many concerns. For instance, I wanted to have only postgraduate students. But I said, no, we want the undergraduate student also, because that's how we finance our expense. Okay, so I had to look for the examples in clinical psychology training, and of course there are two successful models, one in the Punjab University and another one in Karachi University. I know Peshawar University also trained some psychologists, and so are many other universities. But as far as clinical psychology, Assalamu alaikum. I'm Shaheen Atikur Rahman, and I would like to congratulate Rashid Latif Hospital, which is doing good work in looking after the marginalized society, but especially so as 12th October is the Mental Health Day. Unfortunately, in Pakistan, there are so many people with mental shortcomings because of intermarriages. Recently I read a report that nearly 67% people have intermarriages in Pakistan, close family marriages, while in this subcontinent, less than 10% marry close cousins. This is one reason that we have a lot of patients who are covered by their families, who don't even let it out. Unfortunately, also there are a lot of suicides in the youngsters, again because there's no one to talk to. When you have no one to talk to, depression sets in, and then you see that you have nothing else to look forward to. I'm afraid epilepsy is also very great. I work also in Hafsabad with poor communities, and there are so many epileptic patients. We have been very fortunate that with another NGO of mine, even let it out. Unfortunately, also there are a lot of suicides in the youngsters, again because there's no one to talk to. When you have no one to talk to, depression sets in, and then you see that you have nothing else to look forward to. I'm afraid epilepsy is also very great. I work also in Hafsabad with poor communities, and there are so many epileptic patients. We have been very fortunate that with another NGO of mine called Mind, we have been able to help more than 1 lakh people in this sector. But there has to be much more done, especially in the rural area, because we often forget that those who feed us are the rural people, are those people in the villages.
Another shortcoming of this society is that we don't care about women or children. There's no one to listen to their problems. There's no one to cater to them. And that depression is another pain of its own. So we are very grateful that Rashid Latif Hospital, I know Rashid Latif, Dr. Saab, very personally, and his great wife. I hope there are more people like him who can reach out and look after those who have no voice. Unless you have a voice, no one hears you. And if no one hears you, no one looks after you. Best of luck. Thank you. मैं प्रोफेसर मुलाजिम हसन बुखारी हूँ। मैं प्रिंसिपल आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद में हूँ और मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ का जो डे 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया मनाती है वो क्यों मनाती है। ये एक अवेयरनेस का दिन है जो दुनिया मिलकर बनाती है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ही ये लोग मुख्तलिफ किस्म के जहनी अमराज का शिकार हो रहे हैं। मैं आपसे ये गुफ्तगू करूँगा कि ये जहनी अमराज अगर पाकिस्तान में देखें तो कम अज़ कम 5 करोड़ के लोग जहनी अमराज का शिकार हैं। और दूसरी बात यह है कि तकरीबन 20% लोग ओवरऑल, और अगर नौजवान नस्ल में देखें तो कम से कम 36% के करीब जो है हमारे नौजवान इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन क्यों बढ़ रहा है? बढ़ ये रहा है कि हमारे यहाँ जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो हम अगर किसी को बयान करते हैं तो हमारा कल्चर इतना पुराना है, वो या तो हमें पीरों के पास ले जाते हैं या ताबीज़ बांध दिया जाता है या उसको कहते हैं इसको जिन हो गया है या कहते हैं ये ठीक नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहनी अमराज के तमाम, तो मैं नहीं कह सकता, कम से कम ऐसे बीमारियां जो जेनेटिकली नहीं है और एनवायरमेंटल हैं या जो किसी और वजह से हैं वो ठीक हो सकती है। मैं आपको एक छोटा सा गुफ्तगू करता हूँ, आपको छोटा सा ये वो एक क्लिप दिखाता हूँ, आपको अपनी एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि मेंटल हेल्थ का डे जो है हमेशा 10 अक्टूबर को इसलिए मनाते हैं कि हमारे जहनी सेहत से जुड़े तमाम मसाइल को डिस्कस किया करें। ये क्या है? जिस तरह जिस्मानी बीमारी है जिसमें बुखार आ जाता है, उल्टी आ जाती है, टाइफाइड हो जाता है, इसी तरह हमारे अगर जहन के सोच के मुतल्लिक जहनी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम मसाइल आ जाए तो उसको हम जहनी अमराज कहते हैं। दिमाग के अंदर हमें कोई मसला खलल आ जाए, सर में दर्द पड़ जाए, नींद ना आए, 3-4 चीज़ें बड़ी अहम है। मसलन कि कोई खुदकशी, सुइसाइड का मतलब है, या किसी को कत्ल करने का आपका ख्याल पैदा हो जाए, स्टिग्मा, या इस तरह के जो डिप्रेशन के, ये बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं। उनमें एक उलझन है, एक डिप्रेशन है, नींद की बेतरतीबी है, ओसीडी है और फोबिया या खौफ है। तो मैं बताता हूँ उलझन क्या है। किसी वजह के बगैर जहनी दबाव या मनफी ख्यालात का आना, जहनी दबाव की वजह से दिल की, यानी जब इस तरह का उलझन होती है तो दिल की धड़कन तेज होती है, पसीना आता है, ऐसे पता चलता है कि मेरे दिल अटैक होने लगा है। डिप्रेशन में इंसान उदास रहता है, थकावट सी महसूस करता है, जिंदगी के कामों में अदम दिलचस्पी लेता है। तालिब इल्म कहते हैं कि मेरा दिल नहीं लगता पढ़ाई में, काम करने में, और इसके बाद लोगों से शाई नस्ल मिलते नहीं है। तो ये डिप्रेशन की अलामत है। बाज़ का नींद नहीं आती, सोने में प्रॉब्लम होता है, ये भी जहनी दबाव है। जहनी दबाव की वजह से ये भी मसाइल ऐसे हैं जो जिसका जो है ये बेखौबी भी, ये भी मेंटल इलनेस के अंदर है। इसलिए ओसीडी बड़ा कॉमन है। किसी भी किस्म के काम पे दिलचस्पी नहीं लेना, पढ़ाई में, दूसरे उसमें किसी भी किस्म के आपका जो ड्यूटीज है वो वहाँ पे आपका दिल नहीं लगता। दिमाग का एक ही काम खत्म करने के बार बार सोचना पड़ता है कि ये काम खत्म क्यों नहीं, एक ही काम पे तवज्जो देता है, वो जरूरी हो या ना हो। ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ये सारी उसकी मसाइल,
یہ ساری ذہنی دباؤ سے ان کو کنٹرول کیا. فوبیا، خوف، مطلب کہ کرونا کے دور میں جتنے میں کہتا ہوں کافی سارے لوگ بیماری سے زیادہ خوف سے مار گئے. ہر وقت کسی نہ کسی چیز سے بھی فلاں مجھے مار دے گا، ہے جی مجھے فلاں مار دے، میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا. میں تو اس طرح کی یہ بھی ذہنی دباؤ، ذہنی پرابلم کا شکار لوگ ہوتے ہیں. خاص بیماریاں جن کو شیزوفرینیا، بائی پولر لوگ دیکھے تھے ہیں، ڈیمنشیا ہے، الزائمر ہے. یہ جو شیزوفرینیا ہے نا، عجیب سی ایسی ذہنی بیماریاں جس میں ذہن کے خلاف معمول پر الٹا پروسیس کرتا ہے، بہت کامن ہے. چیزوں کو سمجھنے کی کوشش میں تبدیلی، کہ ہر ایک کو کام کرنے کے اندر جو ہے وہ کچھ قبول کرنے کی عمل کے اندر مشکلات کا پیدا ہونا، وہم کرنا، جلد پر ایسے کوئی کیڑے چل رہے ہیں میرے، کوئی ایسی سرسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، یہ سارے شیزوفرینیا. شک کرنا کس چیز کے اوپر، لوگوں سے ملنے میں دلچسپی نہ دکھانا، یہ ڈپریشن کا بھی ایک ہے. کچھ چیزیں اوور لیپ ہو جاتی ہیں ذہنی امراض میں. اپنا خیال نہ کرنا، کپڑے نہ پہننا، کنگھا نہ کرنا، خوراک نہ صحیح کھانا، یہ ذہنی امراض. بائی پولر انسان انتہائی خطرناک ہوتا ہے. کبھی آپ سے خوش، کبھی آپ ناراض، 2 دن آپ کا دوست، 2 دن آپ کے خلاف سوچنے لگتا ہے. تو یہ بائی پولر شخصیت کا ہونا بھی، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ بھی ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں لوگ. اپنے آپ کو پرفیکٹ محسوس کرنا، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، عقل کل کہنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو ایسے انسان جو ہیں. اب الزائمر، ڈیمنشیا تو بالکل بھول جاتا ہے نا بعض کا، اس لیے کہ بوڑھے لوگوں کو گھر کا پتہ بھی بھول جاتا ہے، پتہ نہیں کون میرے گھر میں آتا ہے، گھر میں جاتا ہے، تو ہمیشہ دوسروں سے خفا رہتے ہیں. تو یہ جو بیماریاں چند میں نے کی ہیں ان میں سے 3 بہت اہم ہیں. نوجوانوں میں سوئسائڈ کا زیادہ رجحان پیدا ہو رہا ہے، بزدلی ہے، اسٹگما، اور خدا نخواستہ کسی چیز میں کوئی آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، آپ اپنے رب کی طرف توجہ کریں. اور دوسرا ڈپریشن، اس کا علاج میڈیٹیشن، اپنے رب کو یاد کریں، عبادات، یوگا. اس کے بعد ہے کہ ورزش کریں، کم از کم 15 منٹ روزانہ ورزش کریں. اس کے علاوہ آپ خوراک اچھی کھائیں، فریش فروٹس، ڈرائی فروٹس، جوسز، یہ وہ آپ زیادہ لیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہفتہ بھر لیئر ٹائم گزاریں، ایسا وقت ہو بغیر کسی اس کے. چوتھی بات یہ کہ آپ باہر نکلیں، معاشرے میں چلنا پھرنا سیکھیں، کوئی کام سیکھیں. اگر میں MBBS کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ MBBS کرنے کے بعد کو IT سیکھنا شروع کر دیں. اس کے بعد ایسا ہے، سب سے زیادہ جو اہم بات ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف توجہ دیں، نماز پڑھیں، تہجد کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو مینٹل ہیلتھ کے دن ہم اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں. اور انشاءاللہ تعالی ان چیزوں پہ اوپر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے. اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو بچے اپنے ماں باپ کو بتائیں، اور ماں باپ کنسلٹنٹ سے توجہ کریں، گوگل سے دوائی نہ ڈھونڈیں، نہ ہی خود کسی سیلف میڈیکیشن کریں. کلینکل سائیکالوجسٹ کو دیکھیں، ماہر امراض نفسیات کو دکھائیں، نیورو سائنسز کے لوگوں کو دیکھیں. انشاءاللہ ایسی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں. آئیں ہم مل کے مینٹل ہیلتھ ڈے کے اوپر ان 5 کروڑ لوگوں کا علاج کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ladies and gentlemen, it's my very proud privilege to be part of the Mental Health Day celebrations at Rashid Latif Medical College and University. I wanted desperately to be there in person, but because of my travel plans, I couldn't make it. May I take this opportunity to profusely congratulate all of you for celebrating this auspicious occasion. You're all great friends of mental health, starting from Professor Rashid Latif himself, Professor Aftab Mohsin, Dr. Usman Hotiana, Dr. Nashi Khan, and her wonderful team of psychologists and psychiatrists committed to the cause of mental health.
for a long period of time. This year's Mental Health Day theme is investment in mental health and human well being. Now, this particular concept of well being is usually not equated with mental health, and we see it separately as the phenomenon of happiness. But let me take this opportunity to highlight to you that it is through a multiplication of human well being with happiness that true health can really be part of our lives. We need to invest not just in well being, but also in mental health. Some of the biggest challenges that mental health actually faces today is that there are myths and misconceptions that surround this issue. We invest in cardiology, we invest in pulmonology, but it's so hard to convince the health administrator about the value for money when you invest in mental health and human well-being. The fruits that you are going to reap on account of this investment are massive in terms of their impact on the society. It changes the level of tolerance in the society, it changes the level of happiness in the society, it brings a degree of satisfaction, economic emancipation, social bonding amongst people when you invest in mental health and well being. How to invest, what to invest in is what I would like to share this message about. Human well being to me is like painting the sky of Pakistan with a rainbow of 7 colors. These 7 colors, however, cannot be borrowed from the West, from Western ways of life, and to completely divorce our Eastern values. It is, however, a subtle, beautiful, aesthetic mix of human values, human traditions, which as much belong to our heritage as the rest of the world. It is through that happy marriage between the two that real well being of human beings can get born. What are these factors that can bring well being that is truly ours, that belongs to our sky and our soil, that can then permeate into our soul and our mind? Foremost is our capacity to empathize with others, to feel how does it feel to face whatever is going around in life today, and then show compassion to that person who's facing adversity so that he does not feel left out and alone. Today, the challenges that the flood 2022 has produced in front of us, herein comes the issue of empathizing and compassion. This is not the time also to blame each other. This is a time of cohesion and standing by the side of each other. So, the next color that you need to paint your life with is blamelessness. Let us stop blaming. It is therefore that through empathy, compassion, blamelessness, that we would get connected to each other. Connected not through a Wi-Fi, connected not through an internet connection, but connected in terms of our souls, in terms of our bonds with each other, that the other person that you're connecting with truly understand that you're doing it with tremendous amount of empathy and assurance, and you can be a source of strength in that person's life. But this bonding has to obey a certain value system, and we are protectors of a value system that the world is gradually losing. Only if we get together all those values that East is known for, Islamic societies are known for. They may not have practiced it for several hundreds of years now, but still the heritage of those values is still with us. It then brings us to the beautiful
theme of aesthetics, ihsan and husn that we truly believe in, that everything that we do doesn't need to be just ethical, it is also got to be beautiful and aesthetic. And we, as Pakistanis, as the people of the subcontinent, as Asians and Eastern societies, we do not believe in human independence alone. We have invested over centuries into the phenomenon of interdependence, to believe that humans only know half the truth. And it is when they join with other people, when they pair up with other humans, when they hold somebody else's hand, that is when they complete the entire picture of the 360 degrees of happiness and joy in life. It is this interdependence of human beings that our society and our culture actually truly believes in. So, if I may repeat, the 7 colors of well-being with which we need to paint the sky of 2022 Mental Health Day are empathy, compassion, blamelessness, connectedness, believing in our value system, investing in the beauty of things, of aesthetics, and ensuring that we truly protect our values of interdependence on each other. You and I together make a more mentally healthy society, and it is through our bonding with each other that we can bring a greater degree of well-being in our life. Thank you very much. All my best wishes to you on Mental Health Day 2022. अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया भर में मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और इस दिन की यकीनन एक ख़ास अहमियत है। जितनी ज़रूरी आपकी जिस्मानी सेहत है उतनी ही ज़रूरी हमारी ज़हनी और दिमागी सेहत भी है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जिस्मानी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी आपकी दिमागी सेहत है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, दबाव और दूसरी बीमारियों का शिकार आपका दिमाग होगा, उसका अल्टीमेटली असर जो है वो आपके जिस्म पर भी आएगा। और आजकल के दौर में जब ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हर कोई अपने मोबाइल, आईपैड और टेक्नोलॉजी का ही गुलाम है, उस दौर में तो स्ट्रेस और एंजाइटी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस सूरत हाल में जो है ज़हनी आपकी जो सेहत है वो कहीं ज़्यादा मायने रखती है। शायद आपको लगे कि टेक्नोलॉजी हमारे स्ट्रेस में इजाफा कैसे कर सकती है या ये हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर असर कैसे डाल सकती है। तो वैसा है कि जब आप हर वक्त अपने मोबाइल पे गुम रहेंगे, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद रहते हैं, आप लोगों को खाते पीते देखते हैं, आप लोगों को और काम करते देखते हैं, तो आपके भी दिल में वही कुछ करने की ख्वाहिश जागती है, चाहे आपके जो है रिसोर्सेज उसकी इजाज़त दें या ना दें। और उसके नतीजे में अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कुछ भी आप करना चाहते हैं, और जब वो नहीं हो पाता तो आप एंजाइटी, डिप्रेशन, दबाव का शिकार होते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू होती है। और जब आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो यकीनन उसका असर आपके घर पर, आपके ख़ानदान पर पड़ेगा, और वो असर फिर निकल के माशरे पर भी पड़ेगा, और माशरे में वही कुछ होगा जो आजकल हमारे माशरे में हो रहा है, यानी इनटॉलरेंस है, इम्पेशेंस है। लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, लोग एक दूसरे के जो राय है उसका जो है उसको मुकद्दस नहीं जानते, मुकद्दम नहीं जानते, उसका एहतराम नहीं करते, अपनी बात मनवाना चाहते हैं और अपनी ही बात कहना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए अपनी जहनी सेहत, अपनी दिमागी सेहत, अपनी मेंटल सेहत का ख्याल रखें। इन चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आप खुद देखेंगे कि जब आप किसी बच्चे से भी अगर आईपैड या मोबाइल लेते हैं तो वो चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाता है, वो आपसे लड़ने लगता है, वो रोने लगता है। इस तरह की चीज़ों के लिए डिजिटल स्ट्रेस जो है उसकी इस्तिलाह जो है वो आम हो रही है। तो हमें अपने आप को इन चीज़ों से बचाना चाहिए और इन पर गौर करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और इसके असरात क्या आएंगे। तो इस दिन के मौके पर मेरा पैगाम भी ये है, मेरी गुजारिश भी ये है कि अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, अपने दिमाग को जो है सुकून दें, अपने दिमाग को किसी टेक्नोलॉजी का महकूम मत बनाएं, उसका गुलाम मत बनाएं जिसका असर आपकी ज़िंदगियों पे पड़े और उसके बाद उसके ज़ाहिर है इसके मनफी असरात हैं और आपके लिए मुश्किल का जो है ये सबब बने। तो इस दिन के मौके पर हमें ये आगाही आम करनी चाहिए, हमें लोगों में ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ये मोबाइल, ये आईपैड, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जिसके हम गुलाम हो चुके हैं और 24 घंटे हम इसके मोहताज हैं, ये दरअसल हमारी सेहत पर, हमारे दिमाग पर कितने बुरे असरात मुरतब कर है। मेरा कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप इन चीज़ों को बंद कर दें और एक अलमारी में रख दें और इनके तरफ कभी मुड़ के ना देखें। ज़ाहिर है ज़माने के साथ चलना है,
تو ان چیزوں کا استعمال بھی کرنا ہے، لیکن اپنے استعمال کو لمیٹڈ کریں، اس کو محدود کریں، بچوں کو بتائیں، ان کی ٹریننگ کریں کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، کس سے ان کے دماغ کی افزائش ہوگی اور کس سے ان کے دماغ پہ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یہی چیز ہر انسان پہ جو ہے وہ اتنی ہی اپلیکیبل ہے کہ اس کو اپنے دیکھنا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. یہ وقت سوچنے کا ہے اور کچھ کرنے کا ہے. اگر ہم آج اس بارے میں غور نہیں کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو کل کو ہم اس سے بھی زیادہ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر عثمانی ہے. میں ڈائریکٹر ہوں انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی، یونیورسٹی آف کراچی کی. سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گی ڈائریکٹر ڈاکٹر ناشی خان کو اور ان کی تمام ٹیم کو، جو کہ راشد لطیف ڈپارٹمنٹ آف پروفیشنل سائیکالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا ویلنس سینٹر بھی ہے جو بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور اس سال کا جو مینٹل ہیلتھ ڈے ہے جو کہ ہر سال منایا جاتا ہے 10 اکتوبر کو، اس سال بھی منایا جا رہا ہے. اس کے لیے یہ میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ذہنی صحت، جسمانی صحت، معاشرتی صحت اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی صحت کی بھی ہم بات کرتے ہیں. ایک انسان معاشرے کے اندر ایک فعال اور ایکٹیو کردار اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پہ ہیلدی ہوتا ہے. ہیلدی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جتنی پوٹینشیلس ہیں ان کو وہ اپنے معاشرے کے اندر، روزمرہ کے کاموں کے اندر، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اسکول میں، اور اگر وہ امپلائی ہے تو امپلائی میں، اگر کوئی ہاؤس وائف ہے یا گھریلو عورت گھر پہ کام کرتی ہے تو وہ اپنے ٹھیک طریقے سے اپنے کام کاج انجام دے سکے اور اپنے آپ کو ایک سیٹسفیکٹری اور مطمئن جو لائف ہے، ہیپی لائف ہے، اس کی طرف لے جا سکے. تو آج کل جو پوری دنیا کے اندر ڈفرینٹ طور پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے اسٹریسز بھی ہیں. پہلے ہم نے کووڈ کا بھی مقابلہ کیا، اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ ٹائپ کے جو اسٹریسز ہیں، چیلنجز ہیں، ہماری یوتھ بھی فیس کر رہی ہوتی ہے، جس میں سبسٹنس ایڈکشن بہت زیادہ جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پایا گیا ہے. تو میں اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالوں گی کہ جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ان تمام عناصر کو سامنے رکھ کے ہی آگے پریونشن کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو سائنٹیفکلی طور پہ بہترین علاج میسر ہیں، دوائیں اچھی میسر ہیں، ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور انہی کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو موسٹلی جب ہم کسی مینٹل ڈس آرڈرس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بایو سائیکو سوشل ماڈل کی بات کرتے ہیں. یعنی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سے مرض ایسے ہیں جن میں دوا کی ضرورت ہے، کب ہمیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، کون سے مرض ایسے ہیں جس میں ہمیں سائیکو تھراپی کروانے کی ضرورت ہے یا کاؤنسلنگ کے لیے ہمیں جانے کی ضرورت ہے. تو کبھی بھی اپنے کسی مسئلے کو پرولونگ مت کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اسٹریس کا شکار ہیں، دباؤ کا شکار ہیں، یا ڈر اور خوف کا شکار ہیں، یا ڈپریشن کا شکار ہیں، تو ضرور اپنے جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، جو ماہر ہے، جس تربیت یافتہ ہے، اس سے بات کریں. بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے. وہ سائنٹیفکلی جو ٹیکنیکس ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ Greetings and good day from north of Sweden. This is Makbul Ahmed Babri, also known as Max Babri, speaking to you from north of Sweden. And the time here is at 18:57, and we have about 8 degrees of temperature outside. So I want to congratulate, first of all, Rashid Latif Khan University and also the Department of Psychology and Professional Psychology at the Rashid Latif Khan University, and also my former student and a colleague and a friend, Dr. Nashik Khan, for organizing this Mental Health Day at the university. Mental health is becoming more and more important because many of us are now not only becoming unhealthy, less healthy mentally, but also our attitudes and our behaviors and our values and our dignity and our judgment calls and our lack of capacity to accept responsibility and complain and blame is causing a lot of grief and a lot of sadness to our dear ones and loved ones and people with whom we interact every day, people who work with us in organizations, parents, spouse, families, children, siblings. Everybody gets impacted by our negative behavior if we display those negative behavior, and if we don't learn to be grateful and thankful for everything that we've been blessed with.
we tend to then not only cause pain and suffering for ourselves, but a lot of people around us. And of course, in the process, they become impacted because their self-esteem gets little lower, their confidence gets impacted negatively, their capacity to be grateful and happy and healthy and positive becomes impacted. And overall, this impacts society and countries and nature and humanity in a tremendous way. And it is important, to understand the purpose of life is to be here and to be able to give happiness and joy to our fellow human beings. And while we give happiness and joy, of course, the priority are and is our dear people who are close to us, people who we work with, people who's our family, parents, and if we have parents and if we have siblings and kids and joy and spouse. So please be a source of happiness and joy. Please let us learn to say sorry. Let us learn to say forgive me. We are not perfect. We make mistakes. And only, in my opinion, only the healthy ones have the capacity to go out and say sorry and ask for forgiveness. And not only just Assalamu alaikum everyone. My name is Saima Salman and I'm a cognitive behavior therapist living and working in Singapore for many, many years. But as most of you know, I'm originally from Pakistan, and it makes me extremely happy to see the mental health scene back home, and makes me super proud when my own mentors and my teachers reach out to me regarding something to do with mental health. So thank you so much, Dr. Nashi Khan, for reaching out to me to record a message on Mental Health Day. And I would also like to thank Rashid Latif Medical Center for giving me this opportunity to talk about mental health. So one of the things that I would like to talk about when it comes to mental health is this. For all the clinical psychologists, trainees, students, and whoever is seeking help or is a mental health practitioner, please recognize that it is not 1 out of 10 of us with mental health challenges. It's not like somebody showing up with who needs to be concerned about mental health is someone with a formal diagnosis. Today, it's 10 out of 10 of us, including me. Mental health, what they call me, a ninja with someone who has a black belt in mental health. I'm also concerned about my own mental well-being. So I think we need to start thinking of mental health in a very different way than what we are used to or trained. So knowing that it's not confined to 1 in 10 or 2 in 10 dealing with formal mental disorder, each one of us is vulnerable. And I think the sooner we start to talk about our own mental health issues, our own mental health struggles, our own, times and spaces when we as mental health practitioners or people who look up to us and we talk about how we are cracking down, I think the more it'll help the general population and everyone around us to normalize and to be able to talk about it without feeling ashamed or thinking that I'm weak. So the biggest challenge I have is the societal narrative. कि society हमें बार बार बोलती है कि तुम्हें perfect होना है, तुम्हें ऐसा दिखना है, तुम्हें ऐसे सोचना है, तुम्हें ऐसे लगना है, और हम unconsciously भाग रहे हैं उस image के पीछे, उस perfect image के पीछे. That keeps telling us that we need to look a certain way, we need to present ourselves a certain way, we should be thin, we should be this, we should be that. तो जो society है वो तो sadness ही बेच रही है. उनका business तो इसी में चल रहा है कि वो sadness बेचें. They keep reminding us that there's something wrong with us, कि हम में किसी चीज़ की कमी है. हम constantly we are trying to be someone we're not, trying to portray someone we're not. We're running away from our authentic self because we're chasing happiness, not recognizing कि वो सब खुशियाँ बाहर हमारे फैंसी घरों में, गाड़ियों में, जॉब्स में नहीं है. जहाँ हम ढूंढ रहे हैं वहाँ नहीं है खुशियाँ. और खुशियाँ ढूंढ भी क्यों रहे हैं? क्या है खुशी? If you would ask me, each one of you, I would like us to chase contentment, because there is no other way we can find happiness and peace without contentment. ये जो obsession है
हमारे यहाँ कि हमने ऐसा दिखना है, हमने ऐसा लगना है, मेरी नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए, मेरे फॉलोअर्स इतने होने चाहिए, मेरी पॉपुलैरिटी इतनी होनी चाहिए, मुझे ये, हम फजूल चीज़ों में फंसे हुए हैं। हमें फसाई फजूल चीज़ों में दिया, हमें बिल्कुल दूर कर दिया कि हमारी खुशियाँ हमारे दिमाग के अंदर हैं। ये जिधर हम रहते हैं वो हमारे घर, हमारी गाड़ियाँ, हमारी नौकरियाँ नहीं है, हम अपने दिमाग में रहते हैं, हम अपने दिल में रहते हैं। ना दिमाग की किसी को होश है, ना दिल की। This is the place that needs to be cleansed every single morning when you wake up. You choose your thoughts. आपने कैसे सोचना है, आज क्या महसूस करना है, क्या करना है कि आपकी सोच और आपके एहसासात एक क्लेंस्ड हेल्दी एनवायरनमेंट में हो आज के दिन, हर रोज़। फीलिंग्स की तो हमें फ़िक्र ही नहीं है, हमें तो फ़िक्र, एहसासात की तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। कोई नहीं पूछता आजकल, किसी के पास टाइम नहीं है। फीलिंग्स तो गोल है ही नहीं हमारी। गोल तो हमने बना लिया है कि हमारी बॉडीज ऐसी हों, हमारी पॉपुलैरिटी ऐसी हो, हमारे कपड़े ऐसे हों। वी आर स्टक, वी आर लॉस्ट इन द सुपरफिशियलिटी, थिंकिंग कि इन चीज़ों को चेज करके हम खुश हो सकते हैं। एज आई सेड अर्लियर, प्लीज स्लो डाउन। खुशी इज इन लिफ्टिंग अदर्स अप, खुशी इज इन बीइंग काइंड टू अदर पीपल, खुशी इज स्लोइंग डाउन एंड रिकग्नाइजिंग व्हाट्स इम्पोर्टेंट। किसको प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में वी आर गेटिंग मोर एंड मोर डिस्टर्ब्ड, डिप्रेस्ड, एंक्शियस एंड ग्रीडी। किसी में वो एहसास नहीं है, दैट कंटेंटमेंट इज नॉट देयर, कि मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, जैसी भी लगती हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खुश होना चाहती हूँ। और खुशी जब हम उन चीज़ों में ढूंढते हैं जो हमसे बाहर होती हैं, तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर ही रहती हैं, और हम उस स्ट्रगल में लगे रहते हैं where we think we can control the outside. Again, I would really encourage all the youth, all the young clinicians to please recenter yourself. We are not dealing with disorders in this time and age when we talk about mental health. Each one of us is struggling, and the least we can do as halfway decent human beings is practice kindness with everyone and anyone around you. आपको अंदाज़ा ही नहीं है कितनी सफरिंग है इस वक्त इर्द गिर्द, हर एक की ज़िंदगी में। जो खुश भी लगते हैं, आपको नहीं पता उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. सो द लीस्ट वी कैन डू एज teeny part of us as decent human beings is to practice fierce kindness and compassion. I'm Anila Mansood. I'm serving as Additional Director at National Center for Research on Suicide Prevention at Fatma Jinnah Women's University. Mental health affects most aspects of our life, including our physical, emotional, psychological, and social well-being. We as mental health practitioners are struggling hard to promote awareness and to reduce stigma related to seeking mental health services. The COVID-19 and the current time of floods and crisis in Pakistan has called for integrated and well-structured efforts to provide mental health services for vulnerable communities and affectees. The psychosocial support provided to people at time of stress and crisis matters a lot for their psychological sense of agency and for building resilience in order to combat threatening challenges and influencing productive individual and societal outcomes. Mental health for all is a global priority to be taken care of in all kinds of life spheres. Provision of access to mental health care, well integrated in existing medical facilities for psychologically disturbed people, must be very structured. We also need to see how educational and organizational settings are well equipped to provide mental health support to their employees. Improving mental health of people at workplace demands a conscious effort with commitment to provide support and the way we need to connect to them. It's a genuine expression of concern shown by workplace management through defined policies. I believe there's a huge spectrum for our educational institutions and community initiatives to prevent mental health ailments and to promote healthy, responsible behaviors in our society. Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Professor Dr. Nashi Khan, Dean, Faculty of Social Sciences, Director Rashid Latif, Department of Professional Psychology, Director Counseling and Wellness Center, Rashid Latif Medical College, for inviting me to share my message on this eminent event of Mental Health Day 2022.
Undoubtedly, mental health and psychological well-being had been serious concerns since decades, but during last almost 2.5 years, in which world has faced an unexpected yet severe pandemic in the form of COVID-19, this concern has become manifold. We, the lucky surviving generations, haven't come across such pandemic ever in our lives before the year 2020. It was such an horrifying experience, full of panic, stressors, anxieties, and depression due to the sudden lockdowns and limited movement outside the home, that has changed our life as well as working patterns under the fear, uncertainty, and anxieties. And according to international standards, in 2019, one person out of 8 were suffering from anxieties and depression worldwide, but the ratio has gone far high, almost up to 25% during these years of pandemic, where people were not only suffering from severe physical ailments and had to be in isolation without any proper medical treatment available, along with the mental health disorders and issues related to it. There were many questions related to this issues. Though it had happened globally, not a single country was spared. People lost their loved ones, their dear ones, even youngsters. We have to lose the youngsters and the professionals, etc. Psychological and the mental health has become a crucial point in our life now. In this scenario, globally, the clinical psychologists and psychologists came forward and tried to do our bit, and so did we, to create awareness about COVID-19 and related issues. But responsibility is not over yet, since fear, anxiety, and बहुत बहुत शुक्रिया. मैं शुक्रगुजार हूँ राशिद लतीफ़ मेडिकल सेंटर का और ख़ुसूसन डॉक्टर नाशी खान का कि उन्होंने मेंटल हेल्थ के इस दिन के मुनासबत से मुझे याद रखा और मुझे ये हुक्म दिया कि मैं कुछ रिकॉर्ड करके उनको भेजूँ. मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि मुल्क भर में मेंटल हेल्थ डे को बड़े अहतमाम के साथ कमेमोरेट किया जाता है. मुझे पता है जब मैं वहाँ था तो इस मौके पर मुख्तलिफ माहिरीन आवाम के लिए और नफ्सियात के तलबा के लिए बहुत सी अहम बातें करते हैं. मैं आपकी खिदमत में एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ और वो ये है कि हमारे वो नौजवान स्टूडेंट्स के जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के और साइकोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं, बिलखुसूस उनके लिए ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए जो नफ्सियाती इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं या डिसऑर्डर्स हैं वो खला में पैदा नहीं होते, वो एक ज़िंदा इंसानी माशरे में पनपते हैं, वहीं पैदा होते हैं. नफ्सियात के तालिब इल्म के तौर पर ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए कि हम अपने मुल्क की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल से नावाकिफ़ रहकर मसाइल को समझ सकें और उनका इलाज कर सकें. हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि पाकिस्तानी माशरा पिछले 40 सालों से किस सूरत हाल से गुज़र रहा है. हमें ये समझना पड़ेगा कि मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम, मुल्क में 30 साल तक जारी रहने वाली दहशतगर्दी, मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल, मुल्क में बढ़ता हुआ बाहमी इख्तलाफ, एक दूसरे के लिए बढ़ती हुई नफ़रतें किस तरह के नफ्सियाती मसाइल पैदा करती हैं और जब ये मसाइल क्लिनिक में आते हैं तो इनकी क्या सूरत होती है और हमने उस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अपने क्लाइंट को कैसे तैयार करना है. मेरी आप लोगों से सबसे ये दरख्वास्त है कि इस सूरत हाल से नावाकिफ़ मत रहें. ये मत समझिए कि इस सूरत हाल का आपके काम से, आपके क्लिनिक से और आपके रोज़मर्रा की फंक्शनिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है. आप ख़ुद भी इससे अफेक्ट होते हैं, आपका क्लाइंट भी इससे अफेक्ट होता है. हमें इन मसाइल को समझकर अपनी ज़िम्मेदारियों से उताबरा होना पड़ेगा.
एक दफ़ा फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नाशी खान का कि उन्होंने इस मौके पर मुझे याद रखा। Assalamu alaikum. My name is Naima Hassan. I'm working with United Nations offices in Somalia as stress counselor. My role and responsibilities are to take care of UN personals and their dependents' mental health and well-being. Today, I'm invited to say a few words related to World Mental Health Day. But before that, I say something. I'm very glad to be invited by Dr. Nashi Khan, who is working in psychology department, Rashid Latif Khan University. It's really an honor for me to be invited by her. So you know that United Nations marked October as month of mental health and 10th October marked as World Mental Health Day. And the theme of the year is Make Mental Health for All a Global Priority. This underlines the pressing need This underlines the pressing need to focus on mental health beyond physical health in a very sustained way. We all are living in a very tough time all over the globe. We are facing multiple types of challenges. Just few years back, there was a total disturbance, complete disturbance in life and business due to COVID-19. We face challenges related to jobs, economy, and health. And we also lost loved ones. And there was dire need of mental health services all over the globe with majority of the people. So in this month, looking at the theme of World Mental Health Day, we need to work a lot on sustainable mental health services. And there was dire need of mental health services all over the globe with majority of the people. So in this month, looking at the theme of World Mental Health Day, we need to work a lot on sustainable mental health services, availability of sustainable mental health services everywhere. And we need to work a lot to remove the stigma attached with mental health. Especially, we all mental health professionals, I think it's our main responsibility to take care of our mental health and well-being first, because without well-being, without self-care, we cannot provide the best of services. So, I wish we all work together to raise awareness on mental health. Without self-care, we cannot provide the best of services. So, I wish we all work together to raise awareness
on mental health and well-being with each and every one. We raise awareness to remove the stigma attached with mental health, and we work together to make it the part of health, even with basic health units, where people go and have easy access of mental health services. On this World Mental Health Day, my humble request to my fellow colleagues, all mental health professionals, that we need to make mental health and well-being as our priority. We need to take care of ourselves first so we could serve in a better way. Thank you so very much.